Basically, many students they face difficulties in solving final account sum. If concept is not clear, you won't be able to solve final account sum. Right from bottom level, your concept should be clear. Then only final account sum can be solved by any student. Hello student, this is Sunil Gupta and here in this video, I'll tell you the basic concept or the steps or the process to solve the final account sum. Okay. Here we have meaning to solve the final account sum. Partnership final account is prepared same as sole proprietorship final account. Getting student? Here in 12th standard you are having partnership final account that means final account which is to be prepared by partnership firm. Whereas in 11th standard you are having sole proprietorship final account that means the final account which is prepared by sole trading concern or sole proprietorship business. Everything is same, right? Only 1% difference is there. Rest all things are same. So in final account you will be preparing income statement. What is the meaning of income statement? It is trading and profit and loss account where you will see debit and credit side. You also will be preparing position statement. Position statement means balance sheet. Okay, this is what the meaning. Let's see further in meaning. Final account is the last stage of accounting procedure which is prepared at the end of every financial year. Getting? So final account is final. इसके बाद आपको कोई अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करना है. Final means final. There is no another account which is prepared on the basis of final account. And remember, यहाँ पे already it is mentioned that prepared at the end of year. मतलब कोई भी final account होने दो, whether it is final account of partnership firm or proprietorship firm, sole proprietorship. All types of final accounts are prepared at the end of every financial year. Let's see further. Procedure to be followed for finalization of account. मतलब अकाउंट अगर आपको फाइनलाइज करना होगा, अगर कंपनी का अकाउंट फाइनलाइज करना होगा तो उसका प्रोसीजर क्या, उसका स्टेप्स क्या है. हियर आई विल बी टेलिंग यू राइट फ्रॉम जीरो लेवल टू रीच फॉर फाइनल अकाउंट. बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है? व्हाट इज डन फर्स्ट इन बिजनेस? फर्स्ट विल बी द ट्रांजैक्शन, राइट? नो, कंपनी सबसे पहले या फिर गुड्स बाय करेगी या फिर गुड्स सेल करेगी, फॉर विच they will be getting documents like cash memo, invoice, receipts और bill. कुछ तो डॉक्यूमेंट मिलेगा, या फिर कैश मेमो मिलेगा, या फिर इनवॉइस मिलेगा, या फिर रिसिप्ट मिलेगा. ओके, कोई तो एक मिलेगा. इट लुक्स लाइक दिस. गेटिंग स्टूडेंट? इट लुक्स लाइक दिस. अगर इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो क्या करना है? इसे फेंक देने हैं? नो, you have to file all such type of documents. क्यों? Because इसके बेसिस पे you will be passing necessary journal entries. Remember, all types of journal entries are passed on the basis of documents. इसीलिए बिजनेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, that you have to file. Journal entry looks like this. Okay, this is the format or this is the specimen of journal entry. We can say basically format which looks like this. इस तरह का journal entry दिखता है. After completing journal entry, the next procedure is ledger posting, which is done on the basis of journal entries. जब आप journal entry से लेजर में कोई पोस्टिंग करते हैं तो दैट इज नोन एज लेजर पोस्टिंग. अब यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि यार लेजर पोस्टिंग होता क्या है. सो उसका भी अरेंजमेंट है मेरे पास. आई कैन शो यू दैट. सी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर पोस्टिंग, लेजर एंट्रीज और लेजर अकाउंट. इस तरह का लेजर अकाउंट दिखता है, राइट? वेजेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, लाइक दिस we prepare ledger account. After completing ledger account,
The next procedure is preparation of trial balance. Again, आप ट्रायल बैलेंस तभी बना पाएंगे when your ledger posting is done. लेजर पोस्टिंग तभी होगा when जर्नल एंट्रीज आर डन. तो स्टूडेंट ये स्टेप है, डॉक्यूमेंटेशन से जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग, एंड देन फ्रॉम लेजर पोस्टिंग टू ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या होता है दैट आई विल शो यू, एंड हाउ डज इट लुक दैट आई विल शो यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. फर्स्ट आई वुड लाइक टू कंप्लीट दिस प्रोसीजर. नाउ आफ्टर वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, अच्छा हाँ, ट्रायल बैलेंस जो कि इस तरह का दिखता है. After we prepare trial balance, we will be all set to go for final account. Now we will be ready to prepare final account, and this is the step to prepare the final account. Okay, तो ये आपको स्टेप पता चल गया कि हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते कैसे हैं, मतलब हाउ टू रीच टू द फाइनल अकाउंट, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइनल अकाउंट. नेक्स्ट, अभी देखो, हियर यू विल सी समथिंग न्यू. सी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो कि मैंने मीनिंग में बताया था. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, व्हाट इज द फॉर्मेट? दिस इज टी टाइप फॉर्मेट. टी टाइप फॉर्मेट, वेयर यू विल बी हैविंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेबिट, राइट हैंड साइड दैट इज क्रेडिट. अब डेबिट में क्या आएगा? what to be recorded in debit side and what to be recorded in credit side. I can say that in debit side of trading account we record all expenses and losses at factory level. फैक्ट्री लेवल पे इनकर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस है, विल बी रिकॉर्डेड टू द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? Here we'll record all incomes and gains at factory level. This is informally by rule I can say all direct expenses and losses. I'm using word direct expenses, losses and direct income and gains are recorded to the trading and profit loss account. I can say trading account, because profit or loss account will be the next part. See, less than half page you will be keeping for trading account, and more than half page will be reserved for profit or loss account. You won't be preparing separate profit or loss account on the separate page. You take one page only, and on that page only less than half page will be taken like this. Less than half page will be taken for trading account, and remaining, that is more than half page, will be taken for profit and loss account. प्रॉफिट लॉस में भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड एज यूजुअल रहता है, बट डेबिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एट ऑफिस लेवल. ऑफिस लेवल पे जो भी एक्सपेंस लॉसेस है दैट विल रिकॉर्ड इन डेबिट साइड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट. सेम वे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं ऑल इनकम्स एंड गेन्स एट ऑफिस लेवल. कहने का मतलब ऑफिस लेवल के जितने भी इनकम्स एंड गेन्स है वो रिकॉर्ड कहाँ पर होते हैं? प्रॉफिट लॉस में. और फैक्ट्री लेवल पे जो भी इनकम्स एंड गेन्स होते हैं वो रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, अब यहां पर भी मैं फॉर्मली बोल सकता हूं दैट all indirect expenses losses are taken to the debit side of profit loss account, and all indirect income and gains are taken to the credit side of profit loss account. अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फंडा क्या है that I can explain you in some other video. Let's see next. अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं बैलेंस शीट which looks like this. बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट जो कि बताता है आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस कौन से लेवल पे बिलोंग कर रहा है एट प्रेजेंट. In place of debit side and credit side, we are having liabilities and asset. Liabilities may will record all those items which are liability for the business, and asset may will record all those assets which are asset for the business.
देखो ये हो गया क्रेडिट बैलेंसेस, और क्रेडिट बैलेंसेस बेसिकली लायबिलिटीज शोज क्रेडिट बैलेंस, liabilities shows credit balance. तो credit balance, liability के credit balance will be taken to the liability side and debit balance will be taken to the asset side. Debit balance means asset, asset means debit balance. Okay, मतलब बिजनेस के लिए जो liability है that will be taken to the liability side and बिजनेस के लिए जो assets है that will be taken in asset side. अब इसका डेमो सम मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में मैंने बनाया है, आप वहां पे जाके एंटायर सम्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यू सी नाउ फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, देयर आर टू फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वन इज दिस, where you will be having debit balance along with amount separately and credit balance along with the amount separately. This is the first format, and the another format is this one, where you will be having common column for particulars and separate columns for debit balance, that is debit rupees and credit rupees. Like that you will be having these two type of format of trial balance. स्टूडेंट फॉर्मेट मैटर नहीं करता है, if you know the sum, if you know how to solve final account sum, then trial balance, then format of trial balance doesn't matter.